The Rumi is on his way, and I'll ask Asif Noorani to please take his seat on the stage so we can begin our book launch session, Delhi by Heart. Asif, would you like to come on stage, please? The author will join you shortly. And meanwhile, I'll just do a quick introduction. Asif Noorani was born in Mumbai and migrated with his parents to Pakistan in 1950. Thank you. Renowned for his wit, he's an ardent crusader for cordial relations between India and Pakistan. जहाँ मर्जी बैठ जाइए, दूल्हा जब आया है तो काजी को निकाह की आयतें वो भूल चुका है. मैं इससे पहले I have spoken a lot about your book, which I appreciated, and so you go ahead. I'll ask you 3 questions, but just one question in the beginning. Why did you think of Delhi and not any other city, like for instance Lucknow? Lucknow also had a lot of places which could be of interest to your readers, particularly the Muslim and secular readers like me. Thank you, Asif साहब. सबसे पहले सबका की शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं. सच्ची बात है कि लखनऊ का वीज़ा नहीं था, तो वीज़ा सिर्फ दिल्ली का मिलता था, इसलिए उसमें किताब लिखी. अगर आप सच जानना चाहते हैं, कोई इसके पीछे मिस्ट्री नहीं है. This book actually started, it's an accidental book, as I write in the introduction as well, because from the year 2005 to 2008, I was going regularly to India, to Delhi, as a staff of Asian Development Bank, actually doing some very boring projects in the daytime. And so I had to write a lot of project documents, do surveys and do interviews and make log frames, etc. But you know, that was my first time I ever landed in Delhi, and I realized that this was quite a wondrous place in the sense that all that we define ourselves, you know, our language, our culture, cuisine, even the Sufi heritage, and a lot of other references and you know, our daily lives were actually shaped by the history of that city. So that led me to explore more. I mean, I'd read Indian history and I'd read bits about the empires and the sultans and the Mughals, but to actually get down into a kind of people's history of that region, that area, that city in particular, and you know, and then little discoveries that, for example, the Kawal Bachas who were raised at the Dargah of Hazrat Nizamuddin Aulia still inform our Qawwali and our film music and Bollywood and Lollywood and all the tunes. So, you know, there's a continuum of nearly 900 to 1,000 years, which despite various ruptures like partition, wars, acrimony, negative textbooks, propaganda on both sides, etc., have not been able to go away. And so there's a larger force of history at work. There's a larger people's culture at work. There's a larger heritage at work, which cannot be really, in my humble view, undone by jingoistic narratives of 6 decades. It's there, it's been there for many, many centuries, and it's not easy. So it was a kind of a reclamation of that, exploration of that, and a celebration of that as well. And of course, it's a humble effort. I don't claim to be either a historian or a social scientist or whatever. It just began as a personal account. And then, you know, as you write, you have to be careful whatever you say, because on both sides, there are people who would pick up faults and mistakes and say, well, you are actually making a fool of yourself. So that was the reason there's a lot of research that went into the book. That's what I said before you turned up. And I thought you called Delhi a sort of a multi-petal lotus. I think that can be applied to you also, because you were a writer, researcher, journalist, development professional, and a good speaker also. But tell me, like you, I also visit India quite often.
there are certain things which are jarring, like the script. यहाँ हम उर्दू देखते आ रहे हैं, वहाँ एकदम देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसको कि कोई इंडियन अगर यहाँ बैठा ना हो तो मैं कह दूँ, फिराक साहब had said that it's ऐसा लगता है कि जैसे एक रस्सी बंधी हुई उस पर कपड़े टंगे हुए हैं. तो आई थिंक दैट्स प्रेजुडिस. आपको कोई चीज़ जो बहुत मुख्तलिफ लगी? वैसे तो बहुत काफ़ी चीज़ें कॉमन है, वो क्या है? देखिए, एज अ पाकिस्तानी, चूँकि आपको मालूम है कि हम बड़े होते हैं, बल्कि अव्वल दिन से ही हमें ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, और हिंदू बनिया जो है उसकी साजिश से मुसलमान बहुत तंग थे, इसलिए उन्होंने भाग कर एक अलग मुल्क ले लिया. तो ज़ाहिरी बात है, मैं भी कोई अलग तो नहीं था, मैं भी पैदावार था पाकिस्तान की, मुताला पाकिस्तान की किताबों का, और पाकिस्तान में जो तारीख़ पढ़ाई जाती है. तो जब मैं उन तमाम तर अपने नोशंस, जो कि ठीक है आप किताबें वहाँ पे पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आप शेड करते हैं, लेकिन आपकी जो बेसिक ग्राउंडिंग होती है कई दहाइयों पर मुहीत, वो तो वहीं रहती है. तो ज़ाहिरी बात है, जब आप वहाँ जाते हैं और आप तवातुर से लोगों से मिलते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे भी हिंदू, सिख और मसीही लोग जो हैं इकट्ठे रहते हैं, और गुरुद्वारे के साथ मस्जिद होती है, मस्जिद के पीछे मंदिर होता है, मंदिर के पीछे कसाब की दुकान होती है, कसाब के पीछे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होता है, तो आप एकदम सटपटा जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि अजान भी जो है गूंज रही है और उधर भजन भी गाया जा रहा है. ये तो या तो भजन की तौहीन हो गई या अजान की तौहीन हो गई, हमें तो ये पता है ना. तो अब ये सारी चीज़ें आपकी शाटर होती हैं, क्योंकि ये एक जो प्लूरलिस्टिक लेगेसी थी हमारी, जिसको पाकिस्तान में हमने बिल्कुल ज़बरदस्ती कुल्हाड़ा लेकर ख़त्म किया है और कर रहे हैं बड़ी तवातुर से, कि तो वो उसकी आपको एकदम लगता है कि ये ऐसे भी थे हम कुछ साल पहले ही. तो मैं आसिफ साहब ये चाहूँगा कि इरफान जावेद मौजूद हैं, हमारे नामवर लिखारी भी हैं, इन्होंने एक मजमून लिखा है इस किताब पर. अगर ये कुछ टुकड़े कहते बजाय से कि मैं और बोलूँ, उनसे ज़रूर कहलवाएंगे. आप आके बैठ जाइए, आइए इरफान, यहाँ बैठ जाइए. तो एक चीज़ जो आपकी किताब में मुझे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, आपको मालूम होता है खाने पीने का शौक़ नहीं है, इसलिए कि एक चीज़ जो दिल्ली में आपको मिलती, जो लाहौर में नहीं मिलती, कराची में भी फिर भी मिलती है, वो है मल्टीपल क्विज़ीन. इतना मुख्तलिफ़ किस्म का क्विज़ीन है, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, कि जो आपको यहाँ नहीं मिलता. क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मैं वैसे लाहौर से हूँ और हम काफ़ी खाने पीने के मामले में ख़ुद कफ़ील भी हैं और शौकीन भी हैं, मगर ये बात सच है कि जो वेजिटेरियन खाने की वैरायटी आपको मिलती है हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में नहीं मिलती, और दीगर जो रीजन्स हैं. मगर जो मैंने किताब में लिखा है, एक छोटा सा चैप्टर इसके लिए मुख्तस किया है, और वो बेसिकली वो है कि वो खाने पीने जो हम यहाँ खाते हैं, जिनको कि दुनिया भर में पाकिस्तानी या इंडियन कुजीन से जाना जाता है, मसलन नान कबाब हो गए, निहारी हो गई, हलीम हो गई, पुलाव, मुख्तलिफ़ किस्म की पुलाव. देखिए, वो सब दिल्ली में उनकी इख्तरा हुई, ईजाद हुई, उनकी तरह तरह उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन हुई कि जो वस्ती एशिया से कुक्स आते थे, वो यहाँ पर आके कुछ चीज़ें, जो मसाले मिलते थे, कुछ नए लेकर आते थे, एक नया पुलाव बन जाता था. मुग़ल आते थे, वो उन्होंने और उसको उसमें इख्तरा की. उसके बाद बिरयानी का को इंट्रोड्यूस कराया, फिर बिरयानी की कई इक़साम आ गई, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो, बल्कि निहारी जो है वो कैसे इवॉल्व हुई कि जो लश्कर थे उनको बहुत ही हाई एनर्जी किस्म का खाना देना होता था, इसलिए पूरी रात आप वो सूप बनाते थे ताकि सुबह वो उठकर ज़रा और बोल बाला करें इस्लाम का. तो इसलिए सुबह सुबह उनको निहारी खिलानी पड़ती थी, और वो एक स्ट्रीट फूड से एक मैसेज के फूड से अब वो स्पेशलिटी और ख़वास का खाना बन गया है. तो ये पूरी इसकी एवोल्यूशन है. देखिए, ये सारी बातें जो हैं वही मुश्तरक तहज़ीब और मुश्तरक जो हमारी तारीख़ है उसका हिस्सा है. ज़ाहिर बात है बहुत डिफरेंसेस भी हैं, वहाँ भी इंतहा पसंदी का तूफ़ान है, इससे भी हम नहीं वो क्या बोलते भूल सकते इस बात को भी, और यहाँ भी है. मगर ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में होता आया है, कोई नई बात नहीं है. टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट, रीअलाइनमेंट साउथ एशिया में होती रही है 1000 साल से भी ज़्यादा, कई हज़ार सालों में, और ये अभी जो हुआ है ये फाइनल नहीं है.
یہ آگے اور بھی اسی کا اشکال دکھائی دے گی. بیشتر اس کے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس زیادہ منٹ نہیں ہیں، اور میں جاوید ناراض بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کچھ پیسے میں نے ان سے ادھار لیے. تو لیکن ایک بات جو آپ دیکھیں، آج کے ڈان میں نے ممبئی اور کراچی کا جو موازنہ کیا ہے، دی کاسٹ آف بینگ ایکیوزڈ آف پروموٹنگ مائی سیلف، آپ پڑھ لیجیے گا. اب آپ کے پاس. میں بہت شکر گزار ہوں. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. میں ایک تو رضا رومی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ابتدائی مسودے ان کے ساتھ کچھ دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر یہ پروگرام میں یہ مضمون شامل نہیں تھا. یہ مضمون میں نے چند روز پہلے لکھا، ان کو بھیجا تو انہوں نے مجھے کل کہا، بلکہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ تم نے یہ مضمون کے چند اقتباسات پڑھنے ہیں. تو دلی بائی ہارٹ کا جو میں نے مضمون کا نام ہے، اس کا نام ہے اچھا، اس میں میں اپنے تلفظ کے حوالے سے پیشگی معذرت کروں گا اہل زبان سے کہ اہل زبان کے شہر میں ہوں. یہ اہل بد زبان سے. اچھا، مضمون کا نام ہے دلی قلب و نظر. دلی کی سی پرتناز ناز آفنی، عشوہ تراز دلاویز و دل آرا، ساحرہ کی فسوں کاری سے کسے مفر رہا. دوانہ بے مثل سرمد اوج ولایت نظام الدین، سحر بیاں خسرو آشفتہ سر غالب، میر خوش کلام پر ستوت شہنشان ہند، 22 خواجگان طریقت بے انتہا بتان سیاست. سبھی اس کی جانب مسحور کھنچے آئے تو ایک فقیر رومی رضا رومی بھی شوق دیدار میں کوچا یار کو چلا تو کیا عجب. عجب تو فقط اتنا ہے کہ وہ لوٹا تو چشم تر آیا. وہ رومی کے جو سینے سے کہا بلند کرتا ہے. مخبر دانہ خبر دیتا ہے کہ سینے سے کہا بلند کرنے والے صاف دل ہوتے ہیں، مگر یہ چھپا جاتا ہے کہ یہ لوگ انتہا کے جذباتی اور بلا کے حساس ہوتے ہیں. یہ بات مجھے کسی مخبر دانہ نے نہیں بلکہ داستان دلی از رضا رومی نے سمجھائی. واللہ عالم بالصواب. رضا رومی کی کتاب دلی بائی ہارٹ ایک ندی کی مانند طرح طرح کے کھیتوں، باغات، بیابانوں، شہروں، دیہوں اور بنجر میدانوں سے گزرتی ہے، اور اپنے اندر پھول پتیوں، گھاس، جھنکار، ریت اور سوندھی مٹی کے آمیزے کو ملاتی، لچکتی، بہتی چلی جاتی ہے. اس میں امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی داستان عشق و جنوں، چمپا کے پھولوں کی مہک، پرانی حویلیوں کی قدیمی اینٹوں کے بیچ جم آنے والی کائی، مخصوص طرز تعمیر، مغلئی سترنگے ذائقہ دار پکوان، غالب بے مثل بانکوں کی کجروی اور احساس غریب الوطنی کے شانہ بشانہ لاہور کے شاہ عالمی قلعے کی آبادیوں اور ماضی کی دھیمی موسیقی اسے دھنک رنگ خوش رنگ کرتی ہے. یہ داستان محبت دلاویز تو ہے، مگر نئی نہیں کہ جس کے دم سے دلی اور لاہور ہم پہلو ہوئے. آہ اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے. بہت شکریہ. چونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ نے بہت خوبصورت مضمون پڑھا. اب میں آئی ٹیک سم کوشچنز. آئی تھنک روم for at least 3 questions. Anyone? Hamida, you haven't read the book, so I won't ask you. You read it? Yeah, I mean, I'm very delighted to see Dr. Hamida Khodo here because the book arrived, I think, in April or May, and she was the first one to buy it. So my eternal gratitude to you. And the book, I also want to say that, its first edition is gone, and the books that are available here are from the second edition. Okay. So, any question, please? Ji. Assalamu alaikum. My name is Saim Saeed. I'm from the Express Tribune. My question to you is, there's something special about touring India as a Pakistani, as mentioned on the title of your book as well. So my question is, how did it challenge your notion of national identity in particular? And what did it mean? Did your idea of what it means to be a Pakistani or what it means to be an Indian change after you went? I think I've written quite a bit on that. If you look at, that's the running subtext that
The national identities are there, they're a reality. That's what you grow up with. But there's a larger sort of cultural identity, there's a larger historic identity, there's a larger regional identity, which is also, and I think one of the problems in Pakistan is that we are not comfortable with multiple identities, because that's the way the state has told us to be, that you have to be a Muslim and a Pakistani in that order, and nothing else. So all of your pre-Islamic, pre-Pakistan heritage and history is actually worthless. And that is why if you see we are shy of celebrating the Indus Valley civilization, we are shy of reclaiming what happened thereafter, and the whole memories of our composite culture for 800-900 years. There's no mention of it, save you find in literature or random books like mine, but otherwise you don't find, all you find in Pakistan is stories of Muslim conquests, of how great the Muslims were as rulers, and what about the stories of people, of ordinary people, beyond the darbars and beyond the kind of palace intrigues, who lived in amity. I mean, I just had a session with Rajmohan Gandhi, and this is what we were talking about, that despite the imperial policies of the British, the people in the Punjab, for example, lived in relative communal harmony and in amity. And it was ruptured, and despite all the imperial project, that communal harmony existed. And it still exists, in my view. Yes, please. Just a second, you'll get a mic. But Bill, okay. I repeat, Assalamu alaikum. मेरा नाम शाहिद अख्तर है, although I live abroad, but of course by heart I'm Pakistani. मेरी जाय पैदाश by the way दिल्ली है. आपसे सवाल ये है कि माशाल्लाह दिल्ली बहुत वसी जगह है, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे. If you were to pick one instance or one thing, what impressed you most about Delhi? That's a difficult one. I'll think about it and come back to it. So let's take another one. Yes, is there a lady? Yes, I have a softer corner for them. Please. Just a second, we can't hear you, miss. जी अस्सलामुअलैकुम. मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको सुना है, आपकी उर्दू काफ़ी अच्छी है, तो आपने ये बुक उर्दू में लिखने का नहीं सोचा, या आपको लगा कि वो नहीं सुन? बहुत अच्छा. आई थिंक इट्स अ वेरी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. एक्चुअली मेरी उर्दू जो है अंग्रेज़ी से बेहतर है, अगरचे मैं लिखता अंग्रेज़ी में हूँ, मगर मसला ये है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपको उर्दू की ऑडियंस लिमिटेड है बरे सग़ीर में. और मैं ये किताब इसलिए अंग्रेज़ी में लिखना चाहता था कि मैं चाहता था कि बहुत से इंडियंस जो हैं और बहुत सी हमारी नई नस्ल जो है पाकिस्तान में, जो उर्दू नहीं पढ़ती बदकिस्मती से, और वो इसको पढ़ें. तो अब मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका तर्जुमा करूँ. One last question. ले लीजिए. No question. Anyway, he will be there. वो पीछे है. पीछे है कौन? जी. आप आगे आ जाइए please, so that people can see you. हाँ, और सब 10 अस्सलाम मिनट वालेकुम जी. है 10 मिनट. अच्छा. मैंने आपकी किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इंतज़ार हुसैन की दिल्ली पढ़ी है और खुशवंत सिंह की दिल्ली पढ़ी है. तो अगर आप अपनी किताब का मवाजना उनसे करेंगे तो आप किस तरह से कहेंगे कि आपकी किताब का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है? इंतज़ार हुसैन, खुशवंत सिंह. देखिए, अब आप इतने बड़े बड़े अदीबों से मुझे मिला रही हैं. अव्वल तो मेरा मकाम ही नहीं है कि मैं उनसे अपना मुवाजना करूं. मगर ये अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, सो आई थिंक ऑफ कोर्स बोथ इंतज़ार हुसैन एंड खुशवंत सिंह and other people of that generation have seen enough of what was before partition, and also they saw what happened after the partition. For me, partition or the history of the subcontinent is a figment of what I've read, understood, and oral histories. So I suppose I represent a younger voice, a more post-47, in fact, postmodern voice, if I may call it that. But I must say that your book is great. I'm a book that younger generation does realize. Please give the mic. ये कह दीजिए. This is Your book is a great
This is Dr. Hamida Khuro, in case you don't recognize her voice. No, your book, if, as you say, you're of the younger generation, and so your book is a great sense of, gives a sense of hope that the younger generation is aware of the importance of plural culture, the importance of living together with all sorts of people, and Yes. and accepting the past in its great variety. Variety and its entirety. Yes. That we can't be ashamed of the fact that our ancestors, Yes. most of ancestors of Pakistanis were non-Muslims. That's right. So, you know, that's a fact of life. Exactly. And I also want to add, I think part of the reason also was that I think we have distorted history in Pakistan to the extent that we take it as a given that, you know, there has to be a perennial conflict between India and Pakistan, that there have to be nuclear bombs, that we have to have wars and we have to have conflicts. I think that's a completely fabricated version of history imposed by the state to justify its high military spending, to justify a perpetual state of fear that India is going to attack you and destroy you and dismember you. Because if you look at Mr. Jinnah's statements after partition and when he became the Governor General, or not on one occasion, on several occasions, he spoke of India and Pakistan coexisting like the US and Canada. He spoke about retiring in Bombay. Now, if a man who's the Governor General of a new country had a vision to fight with India for 1,000 years over Kashmir, he wouldn't really think of retiring to Bombay or thinking about his property and his friends. So obviously we have come a long way from that whole idea and that whole notion and what happened thereafter. And I think that is something that we really have to challenge, because we are kind of victims of this perpetual conflict mentality, and which has inhibited our growth, which has distorted generations. I mean, today's extremism in Pakistan, which has been deliberately grafted by the state, it does not have popular roots. It is imposed by the state, it is designed by the state, it is peddled by the state, and a handful of apologists and opinion makers. We need to say no to this, because an anti-India sentiment and bashing India is part of that policy. So, I mean, I'm not saying that we have to surrender our national interests or whatever, our territorial sovereignty or integrity before India, not at all. But we don't have to be a hostile neighbor. We don't have to be sending jihadis over there and for India to interfering in Balochistan. I mean, why does it happen? We really have to put an end to this. So I think part of the underlying reason for my book is also to look at where we started from, because there was enough amity and enough goodwill at the time of partition, which we squandered and totally took a different direction, of which we are paying a very heavy price today. Thank you very much. Well, after listening to you, I'm convinced कि ये किताब आप ही ने लिखी है. So, will you please be there at the bookstore I shall so that be. people can buy it after listening to Mr. Javed Jabbar. Thank you, Javed, for your patience. Please come with the other three panelists. Thank you. Thank you very much.